फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हनीका सिंह व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होगा। मैं भी थोड़ी अभी बेटर हूँ, मेरी तबीयत अभी थोड़ी बेटर है। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ आज के लिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं रेडी हो गई हूँ ऑफिस जाने के लिए। जो भी मेरे को आज के अपने जो मेरे पाइपलाइन में काम है सारे निपटाने हैं। देखते हैं आज क्या क्या काम निपटते हैं। और मुझे आज थोड़ा एक कैब में मुझे जाना है कहीं थोड़ा दूर। तो रास्ता मैं सोची थी कि हम रास्ते में मैं एक बुक पढ़ लेती हूँ। मैंने बड़ा सुना है कि एक बुक बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है ये वाली, रिच डैड पुअर डैड। तो मैं मार्केट में कहीं मैं जा रही थी, रास्ते में थी, तो मुझे एक भैया मिल गए रोड पे ना, बुक बेच रहे थे वो। तो मैंने उनके हाथ में रिच डैड पुअर डैड बुक देख ली, तो मुझे मन किया कि मैं खरीद लेती हूँ। तो मैंने उनसे बुक ले ली है। अब मेरे को बहुत मन हो रहा है इसको पढ़ने का। तो मैं सोची मैं कैब में पढ़ते पढ़ते जाऊँगी, मेरा टाइम भी पास हो जाएगा और मैं बुक रीडिंग भी कर लूँगी। सी दिस बुक, रिच डैड पुअर डैड। लेट मी रीड दिस बुक और फिर मैं आपको उसका अपडेट देती हूँ, फीडबैक देती हूँ कि कैसी है ये बुक। दिस इज माई आउटफिट फॉर टुडे। ब्लैक H&M स्वेटर और वाइन कलर का लोअर है, शूज़ हैं ब्लैक और ब्लैक मेरा बैग है। एंड दिस बुक ये आज मैं पढ़ने वाली हूँ कैब में जाते जाते रास्ते में। लेट्स गो। और रास्ते में फिर मैं व्लॉग बनाती जाती हूँ और फिर आप मेरा व्लॉग देखते रहना कि रास्ते में मैं क्या क्या कर रही हूँ। मेरा पूरा दिन का व्लॉग आप देखो और फिर कमेंट करना कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लग रहा है। ये लाइट आ रही है यहाँ से तो रिफ्लेक्शन ख़राब है। मेरा व्लॉग देखना आज का और फिर अपडेट करना कमेंट में कि मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है, ठीक है। और मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, मैं कैब में आ गई हूँ और अब मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है आज की। जो मुझे मैंने आज जो प्लान किया है अपने काम करने के लिए। नाउ आई एम स्टार्ट रीडिंग दिस बुक, रिच डैड एंड पुअर डैड। और पढ़ती हूँ मैं इसको, फिर इसको आपको फीडबैक देती हूँ इसका कि क्या फीडबैक है इस बुक का। ओके, तो थोड़ी देर में मिलते हैं अभी। Money continues to be left to parents, most of whom will be or already are poor. Because I had to influence father, I learned from both of them. I had to think about each dad's advice, and in doing so, I gained valuable insight into the power and effect of one's thought on one's life. For example, one dad had a habit of saying, "I can't afford it." The other dad forbade those words to be used. He insisted I ask, "How can I afford it?" One of the statement and the other is a question. One lets you off the hook and the other forces you to think. My son, to be rich, Dad would explain that by automatically saying the word, "I can't afford it." Your brain stops working by asking the question, "How can I afford it?" Your brain is put to work. He did not mean that you should buy everything you want. He was financially about exercising your mind, the most powerful computer in the world. He says, "My brain gets stronger every day because I exercise it. The stronger it gets, the more money I can make." He believed that automatically saying "I can't afford it" was a sign of mental laziness. कितनी सुंदर जगह है ये वाला रास्ता बहुत अच्छा है। मतलब ये अच्छा लगता है, इसमें जंगल जंगल और पेड़ पौधे, हरियाली, खाली रास्ता। हाँ, शूटिंग रेंज वाला रास्ता।
पेड़ एक साथ चलते जा रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, हम आज बाहर ही करने के लिए आ गए हैं। उधर बैठ जाते हैं, ये वाली सिटिंग एरिया है, ठीक है। आज खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए हम बाहर आ गए हैं डिनर करने के लिए। आज मैं बहुत थक गई थी। मेरे साथ मेरी बुक है। फ्रेंड्स, मैं घर आ गई हूँ। आई एम बैक होम फ्रॉम माई वर्क एंड मैं आज जहाँ गई थी, मुझे काम थे वो, और उसके बाद उसके बाद आज मैं पतंजलि स्टोर भी गई थी। मुझे कुछ काम था वहाँ पर। पतंजलि स्टोर से मेरे को कुछ मेडिसिन लेनी थी, और उसके बाद बस मैं घर आई थी। देन उसके बाद फिर ब्रदर के साथ बाहर कुछ स्नैक्स खाने चली गई, डिनर करने चली गई थी। तो फिर आज मैं घर में खाना भारी कर लिया था हमने। तो अब मैं घर आ गई हूँ, और मतलब मैं डिनर करके घर वापस आ गई हूँ। और अब मुझे लगता है मुझे लेमन वाटर पी लेना चाहिए, तो नींबू पानी पी लेती हूँ, थोड़ा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके थोड़ी देर बाद फिर मैं दवाई खाऊंगी, और मैं चेंज करती हूँ। फिर मैं थोड़ी देर बाद भी आपसे मिलती हूँ। तो मैं लेमन वाटर बनाती हूँ, लेमन वाटर पीते हैं, नींबू पानी, खाना डाइजेस्ट हो जाएगा नींबू पानी पीने से। नींबू 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 कित्थे है नींबू? कल मैंने नींबू खरीदे थे, सारे कहाँ चले गए? ओ मिल गया। मेरा नींबू पानी बन गया है। मैं जस्ट हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर के अंदर मैंने लेमन ऐड कर दिया ल्यूकवार्म वाटर के अंदर। चेंज कर लिया है मैंने दोस्तों, और बस अब मेरा मी टाइम स्टार्ट होने वाला है। अब मैं अपना सारे काम तो मैंने अपने ख़त्म कर लिए हैं। अब मेरा मी टाइम स्टार्ट होने वाला है। सो ये मेरा फेवरेट टाइम होता है, जब मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता, और बस मैं और मेरा कमरा और मेरा बेड, मेरा मी टाइम सबसे बेस्ट है मेरे लिए। और बस मेडिसिन खाना रह गया है मेरे को। मैंने अभी लेमन वाटर मैंने जस्ट अभी पिया है, इसलिए मैं जो स्टोन की जो दवाई खानी है वो मैं थोड़े गैप के बाद खाऊंगी। और खाना मेरा हो गया, मेडिसिन में भी थोड़ी देर में खा लूँगी। तो मेरे को लगता है थोड़ा सा बुक पढ़ लेना चाहिए। थोड़ी सी बुक मैंने कैब में बहुत थोड़ी सी बुक पढ़ी थी। तो अभी मेरा चैप्टर 1 चल रहा है, लेसन 1, द रिच डैड डोंट वर्क फॉर मनी स्टडी सेशन। सो अभी मैंने बहुत थोड़ा सा ही पढ़ा है, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा। बट वैसे जो भी मैंने थोड़ा भी पढ़ा तो वो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा है कि उसके 2 डैड होते हैं, एक रिच डैड एक पुअर डैड। और
Let me read few points for you. Uh, मैंने हमने कहाँ तक पढ़ा था, हम पेज नंबर 10 पे पहुँचे थे, तो अभी मेरा रह गया कि फॉर एग्जाम्पल वन डैड वुड से द लव ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल ईविल, द अदर सेड द लैक ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल ईविल. As a young boy, having two strong fathers, both influencing me, was difficult. I wanted to be a good son and listen, but the two fathers did not say the same thing. The contrast in their points of view, particularly about money, was so extreme that I grew curious and I began to start thinking for a long period of time about what each was saying. Much of my private time was spent reflecting, asking myself questions such as, why does he say that? And then asking the same question of the other dad statement. It would have been much. I am in my rajai and reading Rich Dad Poor Dad and enjoying my me time. थोड़ा मैं पढ़ती हूँ, थोड़ा आपको भी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो आप भी. Much of my private time was spent reflecting, asking myself questions such as, why does he say that? And then asking the same question of other dad's statement. It would have been much easier to simply say, yeah, he's right. I agree with that, or to simply reject the point of view of saying the old man doesn't know what he's talking about, instead of having two dad whom I loved force me to think and ultimately choose a way of thinking for myself. As a process, choosing for myself turned out to be much more valuable in the long run than simply accepting or rejecting a simple point of view. Page number 11. One of the reason the rich and sorry one of the reason the rich get richer, the poor get the poorer. The middle class struggle in debit is that the subject of money to taught at home, not in. सॉरी कॉल आ गया था तो बीच में होल्ड हो गया. हम पढ़ रहे थे, वन ऑफ द रीजन द रिच गेट रिचर, द पुअर गेट पुअरर, द मिडिल क्लास स्ट्रगल इन डेबिट इज दैट द सब्जेक्ट ऑफ मनी is taught at home, not in school. Most of us learn about money from our parents. So what can poor parent tell their child about money? They simply say, stay in school and study hard. The child may graduate with excellent grade, but the poor person financially programming and mindset. Sadly, money is not tough in school. School focus on scholarship and professional skills, but not on financial skills. This explains why smart banker, doctors, and accountant who earned excellent grade may struggle financially all of their lives. Our nation debt is due in large part of highly educated politicians and government officials making financial decision with little or no training in the subject of money. Total, I often wonder what will happen when he have millions of people who need financial and medical assistance. They will be dependent upon their families or the government for financial support. What will happen when Medicare and social securities run out of money? How will a nation survive if teaching children about. Page number 12. Money continues to be left to parents, most of whom will be or already are poor. Because I had two influential fathers, I learned from both of them. I had to think about each dad advice, and in doing so, I gained valuable insight into the power and effect of one thought on one's life. For example, one dad had a habit of saying, "I can't afford it." इस बुक के अंदर छोटे छोटे स्लोगन है जो कि थोड़े इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ. एक तो सबसे नंबर 1 ये है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग पुअर एंड बीइंग ब्रोक.
Broke is temporary, poor is eternal. This second slogan is very interesting. Listen, ध्यान से सुनो आप इसको. So many people says, "Oh, I'm not interested in money." Yet they'll work at a job for 8 hours a day. इसका क्या मतलब है? आप खुद ही समझ जाओ. Third one is also very interesting. Listen to this very carefully. Rich people acquire assets. Rich people acquire assets. The poor and middle class acquire liabilities that they think are assets. This is seriously true. This is 100% true. फ्रेंड्स, मेरी बुक रीडिंग तो चलती रहेगी. पुअर डैड, रिच डैड, इंटरेस्टिंग बुक है बहुत ज़्यादा. तो ये तो मेरी बुक चलती रहेगी. और अभी ये थोड़े दिन लगेंगे इसको कंप्लीट होने में. बट अब मैं थोड़ा दवाई खा लेती हूँ. दवाई टाइम, रात की दवाई खानी होती है. स्टोन की दवाई है रात की, पथरी की. तो इससे मुझे रिलीफ रहता है. तो रात को मैं खा के ही सोती हूँ. सो लेट्स ईट दवाई एंड देन it's time to close this video. Or if you like this video, then share this video, comment, like this video. And अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, then subscribe this channel. और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलना. So love you all my friends, मेरे दोस्तों. और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो. मैं डबल बार बोल रही हूँ पर कोई बात नहीं, आप समझ जाना. और it's time to close this video now. Love you all. Let's meet tomorrow with a new vibe, with a new vlog. HANEEKA SIINGH vlog. Sayonara. Bye for today.